Okay. Any other doubts you had? Was fixing. I think Vignesh, you had a doubt in fixing, right? Did you try that yesterday? Were you able to try? कल ट्राई नहीं किया था ठीक है, एक बार आज ट्राई करूँगा कर लेना. हो हाँ, जाएगा मेरे ख्याल से yes, yes, because प्लेन से समझ रह गया yes, today also in PSI, so we are going to start patient specific today. So basically आज thematic का ही ओके काम होगा. हाँ, तो उसमें भी I'll do first fixing only, so you can go and try that as a reference. I will just call ma'am and check if she's joining in. Otherwise, we just start. Ma'am is not picking my call. Any idea? Like आज कोई surgery ऐसे कुछ था क्या ma'am का? Like was she busy or anything in her schedule? वैसे तो कुछ नहीं बताया नहीं बताया. ठीक है. We'll wait for 5 more minutes then, and then just begin. ओके I think patient Manush का maxilla और mandible अपन ने तो separate किया ही था, right? All of you have done that exercise, right? Patient Manush के scan पे. I यस yes. तो हम लोग उसी को यूज करके PSI बनाएंगे because मेरे पास बाकी के scans आए नहीं हैं तब तक. So we're going to use this only and go ahead with that. So we'll just be requiring the maxilla and mandible from patient Manush. So if you want to do simultaneously, so just in your thematic, copy these two files of maxilla and mandible for patient for the patient and keep it ready. मैम फिबिला का सीटी स्कैन अभी आपको मेल कर रहे हैं मैम अभी
हाँ, सॉरी, मैं एक्चुअली मैम से बात कर रही थी तभी। फिब्यूला का गाइड, फिब्यूला का स्कैन भेज रहे हैं क्या मैम? हाँ मैम, अभी भेज रहे हैं फिबुला का स्कैन, और मैम इलियक क्रेस्ट जो मैम ने बोला था कल, पेल्विक का, हाँ, हाँ, वो ठीक अभी है, मैम भेज रहे हैं हम, बस आप ठीक है। वो तो फिर वो कल कर लेंगे, आज पीएसआई ये वाला खत्म करते हैं। बट ओके मुझे मैम। क्या डाउट था, इलिया क्रेस्ट का। इलिया क्रेस्ट आप कट करके मैंडिबल में प्लेस करते हो एट द लोअर हाँ जी जंक्शन। मैम। कहाँ पे, वो एंगल पे क्या मैंडिबल के? मैम कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंडिबल में भी कर, एंगल भी कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं, ओ, ऐसा मतलब ओके, हम बेसिकली। जहां भी सेक्शन करेंगे वहाँ। ओके, ओके, सो नहीं मतलब, बिकॉज इलिया क्रेस्ट के लिए हम लोग ने कभी एज सच कोई ऐसा सर्जरी परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे थोड़ा इनपुट चाहिए था उसके लिए, तो मैं अकॉर्डिंगली फिर आपका वो प्लान करूंगी इसीलिए। मैम बॉस बताएंगे, मैम बॉस। मैम मैम मैक्सिला में भी यूज कर सकते हैं, मैंडिबल में भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, मेनली हाँ जी मैम। मैंडिबल रिकंस्ट्रक्शन लेस देन 5 सेंटीमीटर अगर आ, होता है डिफेक्ट, तो हम लोग इलियक क्रेस्ट यूज कर लेते हैं कभी। ओके, इफ द मैंडिबल रिसेक्शन इज लेस देन 5 सेंटीमीटर्स, इलियाक क्रेस्ट यूज हो जाता हम्म, है। और अगर हाँ, उससे नॉन ज्यादा, वेस्कुलराइज्ड। ओके, अगर अंडरस्टूड। वेस्कुलराइज्ड यूज करना है तब तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी कर सकते हैं इलियक क्रेस्ट। राइट, राइट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो फॉर नाउ स्टार्ट विथ द पेशेंट मेनूश वाला पीएसआई, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं आज वो वाला। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। राइट। तो मेजरली आपका जो भी डिजाइन का काम, इम्प्लांट डिजाइन का काम रहेगा, वो आपका थ्रीमैटिक में ही होगा। एंड most of the times you will use surface, you will use sketch, design, curve. ये आपके 4 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, की प्रैक्टिसिंग दिस फंक्शंस। और द व्हाट इज ए फंक्शन रहता है इसके अंडर जो भी आता है ना, उसको जस्ट एक एक बार एक्सप्लोर करते रहिए एवरी टाइम, बिकॉज दिस इज व्हाट विल हेल्प यू, यू नो, improve your designs or get better designs, right? So these 4 are the important tabs: surface, curve, sketch, design, for patient specific implant generation, right? Now, first I'll import my parts. So I'm going to go import, file, import, and मैं maxilla और mandible import कर रही हूँ पेशेंट का। So in the object tree, you can see you have imported the maxilla and the mandible, right? Now, the first step before we begin any designing is, once we have imported the STLs, we just fix them as fix the STLs. That's like a standard procedure that we do. So I'm just going to fix both of them. First, I'll fix the mandible. So there are multiple shells. I'm now just going to click on my mandible. So this is the major shell that I want. बाकी के लिए मैं invert करूंगी, और जो भी noise के शेल्स आ रहे हैं या ट्राइंगल्स आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पे विजिबल है, मैं राइट क्लिक करूंगी. यू कैन राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्क एरिया, और यू कैन राइट क्लिक ऑन द मार्क ट्राइंगल्स एज वेल, एंड डिलीट. Once that's done, I will again check my diagnostics. अपडेट कर रही हूँ. So yeah, that's clear. Now I'm just going to change my part. मुझे अगर पार्ट चेंज करना है तो मैंने क्या किया, मैंने पार्ट पे क्लिक किया, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन मैक्सिला. तो यहाँ पे मेरा पार्ट अपडेट हो गया है. Now I'm going to again update the diagnostics.
अगेन यहाँ पे मुझे शेल्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, so I'm going to go to mark shell, mark my important shell, then invert the marking so that जो भी बाकी का noise है वो select हो जाए, and जो noise select हुआ है फिर उसको हम delete कर देंगे. Then we'll just click on update. Close. So both our files are fixed. I'm just going to hide the coordinate system because we will not be needing that. Okay. Now first let me check how heavy the files are. So the files are quite heavy. So before proceeding, what I'm going to do is I'm just going to do improve mesh so that we have files which are easier to work with. Right. So as we can see the tumor, let's assume that we would want to create a surgical guide. Before making an implant for the tumor, we'll have to resect the tumor section, right? So what we'll do is for the resection, we'll plan a surgical guide. So we can cover your concept of surgical guide in this PSI itself. So once this is fixed, we'll move on to that. Right. So ये हमारा improve mesh हो चुका है. Yeah, comparatively the files have become easier to use. Right. तो मैक्सिला हमने बस रेफरेंस के लिए लाया है, हमारा मेन काम मैंडिबल पे होने वाला है, राइट? So now assuming that we're going to make cut sections, so I'm just going to place planes and create planes for cut section. Just let me know if the cut planes are feasible or not. So for designing cut planes in 3-matic, what do? We go to design, create analytical primitive, and create datum plane. Okay. The other option is going to sketch and creating a sketch. So you can either cut using a sketch or you can cut using a datum plane. Ideally, datum plane is an ideal option or the best option to go forward. So design,
create analytical primitive, create datum plane. So to understand the borders of the tumor, what I'm going to do is I'm going to transparent the mandible. So approximately my tumor border is somewhere here. So I'm going to create my plane according to that. So the method I'm using is 3 points. There are other different methods that you can use. So these are similar to the methods I had shown for sketch. So I'm going to use a 3-point method. I'm going to mark my first point somewhere here. Then I'm going to mark my second point. I'm going to click on point 2 and mark somewhere here. And then turn the part upside down. And somewhere perpendicular to these points, I'm going to mark my point 3. So every time I want to change, I have to click on point. And then I'm going to mark 3. So this is the plane that I'm seeing. So I'll just apply. So this is a plane that we have created here in Thematic, right? Now, suppose I want to increase the width, height of the plane. I'll select the plane. In the properties, I'll get delta x and delta y. So I'll just increase it to say 50 by 50. Now, if you see, this is giving me an angle. It's going into the tumor at an angle. We don't want that, right? We want to first align the plane. So I'm going to align interactive rotate. I'm going to select the plane and just slightly rotate till we get a proper angle or angle we are satisfied with. Something like this. Now I'm going to see the front view. And maybe adjust slightly. Yeah. So now we have this this plane demarcates the tumor border for us. But we know when we resect, you will always keep a certain margin. So what should I keep as the margin? If you can let me know, then I can accordingly proceed. हेमीमेंडिबलेक्टमी करनी है इसमें 1 centimeter margin is safe on both the sides. On both the sides. Okay, ma'am. So what I'm now going to do is, now that we have taken, so ma'am, this plane works as the tumor border plane. हाँ, plane ठीक है. ठीक है. तो मैं अभी इसको duplicate करूंगी, right? And as we had decided कि हमको एक 1 centimeter का margin रखना है. तो मैं again, I'll go to align, I'll go to interactive translate, and यहाँ पे इसको 10 1 centimeter is 10 mm. तो मैं यहाँ पे 10 set कर रही हूँ अपना step. एंड ये जो मैंने डुप्लीकेट बनाया था इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ. सो ये 1 सेंटीमीटर का आपको मार्जिन आ गया. सो आई एम गोइंग टू रीनेम दिस इज माय tumor border. This is my cut plane with 1 centimeter margin. तो ये हमारा जो फ्रंट एंटीरियर पोर्शन पे ये सेट हो गया. Now coming here, I'm just going to close both these planes. Go to the right. I'm going to go to the left view. तो अगर आपको व्यूज चेंज करने हो तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन आता है डिफॉल्ट व्यूज का. सो यू कैन गो टॉप, बॉटम, एज पर योर विश. आई विल आल्सो मेक दिस opaque so we can see better, right?
So I'm going to choose right. So again, I'm going to take a plane for this region, design, create analytical primitive, datum plane, 3 points. So let my point 1 be somewhere here. Let my point 2 be somewhere here. Since I had not selected point 2, so ये मेरा point 1 ही shift हो गया ऊपर, if you can see. So always before you flip onto the point, you have to first select which point you're indicating at that moment. Right, I got that point. So now these 2 points are done. Point 3, I'm marking this as my point 3. तो एक plane approximately create हुआ है. We'll have to angle this in a better way definitely. For now, I'm just going to click apply. Right, so this is our datum plane 2. I'm just increasing it to 30 by 30. Right, now we have to align this. Align, interactive, rotate. So I don't want my plane to rotate from this center of axis. I want it to rotate from here. So I'm just shifting my point of rotation. Something like this. If I'm noticing, ये काफी ऊपर जा रहा है. So what I'm going to now do is I'm going to keep my point of rotation here and rotate this somewhere like this, something like this. So बीच बीच में आपका center of rotation change करते रहिए so that you can achieve the exact thing. Now I'm just going to align it to the correct view, which is right. And now I'm going to change my center rotation again to the top. Right. In case your coordinate system is not, taking the correct angle, you can always switch and try any other view. Yeah, so I think this should work. I've taken object. So I'm just going to now, yeah, see, now it is taking more gradual correct approach, right? So now we have a straight plane. Again, I'm going to come back since यहाँ पे ये कट ऊपर जा रहा है, मैं इसको और थोड़ा oblique करूँगी. Now I'm going to zoom in. We see, I'm going to further take this up, right? I'm going to translate this plane. I have changed. ये screen में ऐसा जा रहा था, मुझे ये थोड़ा diagonally pull करना था, तो मैंने object coordinate system करवाया इसको, and I'm going to pull it थोड़ा down. Okay, यहाँ पे अभी वो 1 centimeter से pull करेगा. So what I'll have to first do is, since I don't have any particular number set for myself, I'm just going to enable the snapping and try and align this something like this. I'm now going to go to rotate. This is going to be my main entity. I want my point of rotation थोड़ा ऊपर.
So yeah, this is your approximate cut. I'm unable to change the point of rotation, so trying to look into that. Yeah, somewhere here it is found. So I've made it oblique such that it just does not touch the nerve. पीछे से दिख रहा रहेगा. So ये आपका mandibular foramen था. So I've made it oblique in such a way that it doesn't impinge that region, and we have a closer cut to the mandible. So do you want to go ahead with this cut, or is there any other cut that you want to plan? You can just mark it on the screen as per the requirement, or we can proceed with this and we can take a 1 centimeter margin from this plane. मैम हेलो. हाँ, yes. मैम दिव्या मैम. बोलो. मैम मैनस खान में हमने मैम कॉन्डाइल सेव नहीं किया था मैम पूरा मैम. नहीं हम तो कॉन्डाइल ये नहीं बचाएंगे नहीं, हम लोग हटा देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बाद कुछ बचेगा नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये तो देख ही लो ना. ओके मैम. ओके. हाँ, मतलब दिस इज बेसिकली मी ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप प्लान कर सकते हैं. लाइक हाँ, तो आप शुड आई टेक अ क्रॉस कट? ओके, समवेयर लाइक दैट. That should be my first plane, or that should be my final plane for cut. So I will shift my plane accordingly. Right. So oblique किया. Right. And now I'm going to move it slightly up, somewhere here. So we can consider this as our datum plane to my border. Right. इसको duplicate करेंगे and we'll enable our snapping of 1 centimeter. I'll just change my selection here to duplicate, and yes, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका कॉन्डाइल भी कट हो रहा है. So for now, ma'am, how do you want me to show? You want me to show by बस I wanted to show this only कि कुछ भी नहीं बचा, इसलिए we have to exclude the condyle as well, so we'll do hemimandibulectomy sort of thing. Okay, नहीं, so you want, so we can cut the entire section, right? So we don't Yes, require so a jig. we don't need a posterior guide. Yes, yes. So we'll just require a anterior jig, right? So now, just to understand कि आपने जो datum plane बनाया है, right? This is the plane. So what I'm going to do is
to reduce my components in this, I'm just going to delete my duplicate. I'm just going to maintain one datum plane for the condylar region that demarcates कि हमने कहाँ पे उसका cut section लिया था पहला वाला, right? So I'll hide this. To understand कि हमारा कट कैसा गिरेगा और कट करने के बाद मैंडिबल का कितना पोर्शन बचेगा, फर्स्ट बिफोर क्रिएटिंग द जिग वी ऑलवेज कट. मैं इसको पहले ओपेक कर लेती हूँ. वी कट एंड चेक कि इसका कट कैसे गिर रहा है, राइट? तो उसके लिए डिजाइन कट. तो माय कटिंग एंटिटी, बेसिकली मेरा एंटिटी बनेगा हमको जो कट करना है पार्ट, दैट इज मैंडिबल. माय कटिंग एंटिटी बिकम्स datum plane, right? And I click create new parts and unclick on remove originals. Right, so now we have two parts in front of us. Hiding this. So if you see एक thin line recreate हुआ है यहाँ पे, so this portion will be our cut section. हम इतना part cut करेंगे. And this will be the remaining part. So if you want to see it with respect to the maxilla, after cutting, this is what shall be remaining for the patient. Okay, so now designing a surgical guide for this cut section. So whenever you design a guide, your first understanding should be placement. कि आप कितना सर्जरी में ओपन करोगे पेशेंट को, कौन सा बोन एक्सपोज्ड होगा और कितने हद तक वो एक्सपोज्ड होगा, और सॉफ्ट टिश्यू क्लियरेंस. बेसिकली आप कॉटरी कितना करोगे, आर यू गोइंग टू एक्सपोज द एंटायर बेयर बोन और इज like some part of soft tissue going to remain, and based on these things you will decide on your surgical guide. So before I proceed with surgical guide, for this meeting only less than 1 minute is left. So what we'll do is we'll just log out and then log in, और उसके बाद फिर वो एक स्ट्रेच में सर्जिकल गाइड फिनिश करेंगे. ठीक है? So I'm ending the meeting, and then we can all join in the next 2 minutes and then begin further.